Hello dear students, I hope you all are doing well and I also hope that you are enjoying history lessons with me. So today we are going to learn a new chapter which is the age of industrialization. Okay, so let us quickly see what all we are going to learn in this chapter. So first of all we will be learning that what happened before the industrial revolution, what was happening. Then we will be learning about hand labor and steam power. Different inventions. Then we will be learning about industrialization in the colonies and then how the factories came up, and then we will be learning about the peculiarities of industrial growth, and finally the market for goods and the conclusion. Okay, so let us quickly see. Let us begin with the first picture, the first image which is given in your book, and it says dawn of the century. Dawn means, children, dawn means morning. Okay. So, what does it say? Let us quickly see. At the center of the picture, you can see there is a goddess like image, right? It represents the angel of progress, okay, bearing the flag of new century. She is bearing the flag of new century. Now, she is gently perched on a wheel with wings. अब ये एक एक wheel के ऊपर खड़ी हुई है and she has wings, okay. Now, what does it symbolize? Her wings symbolize time here, okay, and her flight is taking her into the future, and now she is moving into the future, okay. Floating about behind her are the signs of progress. Now, इसके ऊपर क्या है? Signs of progress. Which all are they? Like railways, cameras, right? Railways, cameras, machines, printing press, and factory. So, this picture symbolizes progress, right? It symbolizes that we are entering in a new era, right, of industrialization, okay. Now, you should also remember that this was published by E.T. Paul in England, okay. So, these small things are very important from exam perspective. So, please always remember who published it, okay. Then, we have to look at the next figure which is given in the book, which shows a modern mechanic. You can see in the picture there is a modern mechanic here, right, who builds bridges, ships. You can see who is building bridges, who is building the ships, who is building the, creating the buildings, okay, towers and high rise buildings. You can see this Eiffel Tower is also being shown here. Now, at the top of the picture, the one at the top is Aladdin. I hope you all know about Aladdin, the one who had the magical lamp. You must have heard the stories, or you must have watched cartoons and serials about it when you were, too young. Okay. So, Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his magical lamp. Now, Orient means, Orient means the Eastern world, right? So, because they think that the Eastern world is majorly associated with some magical stories, some fairy tales, etc. So, Aladdin is shown as representing the East and the past, and the mechanic stands for the West and modernity. So, Aladdin shows, the backward image. In the past, people used to, talk about Aladdin who had the lamp. Whenever he used to rub the lamp, a genie used to appear, and whatever Aladdin used to tell him, the genie used to create those things for him, right? So, these are considered as the, backward things, right? And the mechanic is here, which is representing the western side of the world and also representing the modernity, because when these new things will be developed, right, so it will bring modernity in the society, okay. So, these images offers us a triumph account of the modern world. So, अब ये images हमें बता रही हैं कि now we are entering in the modern world successfully, okay. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change. Now, it is also showing that now we are moving very fast into the technological change. In terms of technological change, we are very fast. And in terms of innovations, machines and factories, railways and steamships, all these are signs of industrialization, right? The history of industrialization thus becomes simply a story of development. So, what you can say that history of industrialization means, it is a simply story of development, right? Because so many developments happened during the era of industrialization.
and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. Absolutely right. The modern age, you can connect it to the time of technological progress. So I hope you understood both the pictures which are given in this chapter. Now let us quickly begin with the Industrial Revolution part. So when we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial workers, we mean factory workers. So generally when we talk about industrial production, in our mind, so many things come up, like workers working in the factory, different industrial units, right, different machines, chimneys, etc. And when we talk of industrial workers, we always connect them to the factory workers, right? But there is a problem with such ideas. We need to see that even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large scale industrial production for an international market. Which means कि जब हम ऐसे सोचते हैं कि industrial production और factory production, we think of chimneys, workers, factories, etc. तो क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तभी ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, मतलब तभी क्या मास प्रोडक्शन हुआ? नो, mass production was happening since ages. We have read in the previous chapter, globalization. We have read thoroughly about globalization, and we have also read that globalization had been happening since ages, right? So for example, if we take an example of textile industry, we have read about the Silk Route, right? So globalization is happening since ages, means globalization कैसे हो रहा है? When the goods are being sold. तो गुड्स कैसे सोल्ड हो रहे हैं अलग अलग मार्केट्स में? क्योंकि मास प्रोडक्शन तो हो रहा है, राइट? सो दिस मास प्रोडक्शन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज हैपनिंग सिंस एजेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि तब भी इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें वर बीइंग सोल्ड. बिकॉज कहाँ जा रहा था सामान इंडिया से? अरेबिक कंट्रीज में भी जा रहा था, यूरोप में भी जा रहा था, राइट? टू ऑल दीज कंट्रीज वी वर सेलिंग, राइट? इवन चाइना वाज सेलिंग. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, राइट? सो this was not based on factories, but ये जो काम हो रहा था, it wasn't happening in factories, right? So it is not a new thing. New thing से when I say new thing, industries बाद में setup हुई, लेकिन mass production तो पहले से ही हो रहा है, right? So many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization, right? So when we talk about this thing, like which I was telling you just now, कि पहले भी mass production हो रहा था, right? But factories में नहीं हो रहा था, वो घरों में हो रहा था, राइट? सो हिस्टोरियंस कॉल इट एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो काम हो रहा था, राइट? तो मास प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो मास प्रोडक्शन हो रहा था, वील कॉल इट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, सो इन दी 17th and 18th centuries, merchants from towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. Now 17th 18th century में क्या हुआ? देखो, merchants 17th और 18th century we are talking about. So merchants from the towns in Europe began moving to countryside. इसका क्या मतलब है कि जो काम टाउन्स में हो सकता था वो टाउन्स में नहीं करवा करके मर्चेंट्स कहाँ चले गए? कंट्री साइड में. कंट्री साइड मतलब विलेजेस में, राइट? सो ऐसा क्यों किया उन्होंने? सिटीज़ में क्यों नहीं काम करवाया? बिकॉज सिटीज़ में गिल्ड्स वर वेरी वेरी पावरफुल. आई विल बी टेलिंग यू आफ्टर 2 minutes व्हाट इज गिल्ड्स. सो मर्चेंट्स ने टाउन से सबसे पहले तो विलेजेस की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया. एंड व्हाट दे डिड, दे हैव गिवन मनी टू पेजेंट्स एंड आर्टिसंस, ओके, एंड देन दे कन्विंस्ड देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. मतलब वहाँ पे उन्होंने उनसे मास प्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया और उनको बोला कि तुम ये मनी रख लो, एडवांस रख लो, और क्या करो, हमारे लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो, सो दैट दोज मर्चेंट्स कुड सेल इट टू द इंटरनेशनल मार्केट. ओके, सो विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द डिमांड फॉर गुड्स बिगैन ग्रोइंग. अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था? वर्ल्ड ट्रेड का थोड़ा एक्सपेंशन भी हो रहा था. एंड देन ब्रिटेन, ब्रिटेन हैज़ कैप्चर्ड इंडिया, China and Portuguese have controlled over Indonesia, right? And many countries. So all over the world, trade तो बढ़ ही रहा था. साथ ही साथ ये जो बड़े countries थे ना, जैसे रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी,
पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ऑल दीज पीपल इनके कॉलोनीज भी एक्सपेंड कर रहे थे। ये लोग छोटे छोटे देशों पे जाके कब्जा जमा रहे थे और उनको अपनी कॉलोनीज भी बना रहे थे। तो क्या हो रहा था, गुड्स का जो डिमांड था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। लेकिन जो मर्चेंट्स थे जिनको इंटरनेशनल मार्केट मिल गई थी, है ना, वो अपना प्रोडक्शन टाउन्स में नहीं बढ़ा पा रहे थे। वाई? I told you few minutes ago I'll be explaining you guilds. So now I'll be explaining you guilds. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. अब guilds क्या थे? Guilds were, you know, it was more like a group of some powerful merchants, right, who were very rich and powerful. तो ये क्या करते थे, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे और इनका खुद का ये ग्रुप होता था। जैसे ही कोई नया मर्चेंट उसके अंदर उनके ग्रुप में एंट्री लेना चाहता था तो ये उसको बिल्कुल भी एंट्री लेने नहीं देते, मतलब उसको एंट्री देते ही नहीं थे ये लोग। सो वो मर्चेंट्स जो नए हैं या जिनको लग रहा है कि नहीं अब हमको प्रोडक्शन करा के हमें मार्केट मिल गया है तो आगे सेल करना है, तो नए मर्चेंट्स को ये एंट्री नहीं देते थे। तो उन मर्चेंट्स ने क्या सोचा, what we can do that we can go to villages and we can find some people there and we can ask them to work for us. Okay, so that is why these merchants from towns in Europe began moving to the countryside. Okay, so I hope this guilds thing is clear to you. And rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. तो जो rulers होते थे यूरोप के उस टाइम के देशों के, उन्होंने भी क्या कर रखा था, एक तरह से गिल्ड्स को मोनोपोली दे रखी थी कि आपके पास ही राइट टू प्रोड्यूस है और राइट टू ट्रेड है, क्योंकि ये जो गिल्ड्स थे ना, दे वर वेरी पावरफुल। तो इनके हाथ में पावर थी, ये रूलर्स को हटा भी सकते थे। तो जो वहाँ की जो रूलर हुआ करते थे वो भी इन गिल्ड्स से डरते थे, तो वो क्या सोचते थे कि चुपचाप इनको पावर्स दे दो, इनकी बात सुनो, राइट। So rulers have made these guilds powerful एक तरीके से दिखाने के लिए। Okay, it was therefore difficult for new merchants to set up business in towns. तो जो नए merchants थे, as I told you, उनके लिए it was very difficult to set up their own business, so they turned to the countryside. Okay, तो वो countryside में चले गए, villages में चले गए। In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. तो जो विलेजेस के अंदर जो गरीब किसान लोग थे, दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर दी मर्चेंट्स, राइट। तो उनको भी लगा कि इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, लेट अस वर्क फॉर दीज पीपल। Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. Now these merchants, they used to live in cities, but their work was done in the village areas, right? So a merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn, which is the thread that was spun, was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers. So what happened कि merchants तो क्या कर रहे हैं, merchants तो towns में ही रह रहे हैं, peasants के पास वो गए, उन्होंने उनसे कहा कि आप ये advance रखो, आप ये काम प्रोडक्शन का हमारा करना शुरू कर दो। नाउ दोज जो पेजेंट्स थे उनके पास भी कोई बहुत बड़ा लार्ज लैंड नहीं था, राइट, क्योंकि लार्ज लैंड तो किसके पास था, सारे अरिस्टोक्रेट्स के पास में था। सो उनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड ही होता था। सो देयर दे यूज टू अपना थोड़ा बहुत वो फसल उगा लेते थे, लेकिन उनके पास भी ज़्यादा काम नहीं था। तो उन्होंने इन मर्चेंट्स का काम तो एक्सेप्ट कर लिया और वो करने लग गए। लेकिन द प्रॉब्लम वॉज, मर्चेंट्स तो टाउन्स में रह रहे हैं, विलेजेस में कौन रह रहे हैं, द वर्कर्स, राइट। तो अब सपोज करो अगर कोई मर्चेंट है ना इंग्लैंड में, तो उसने पहले क्या किया, वुल खरीदी किससे, वुल स्टेपलर से। स्टेपलर कौन होता है, जो विद हु विल सॉर्ट द वुल, राइट, कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। एंड देन वो किसके पास जाएगा, स्पिनर के पास जाएगा, है ना। द यार्न वॉज देन स्पन। अब उसके बाद भी बहुत सारे स्टेजेस होते थे, वीवर्स के पास जाएगा, फुलर्स के पास जाएगा, फिर डाइंग करने के लिए डायर्स के पास में जाएगा। तो एक जगह पे काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे काम हो रहा है, राइट। जैसे बहुत सारे एरियाज के अंदर, बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर ये काम बटा हुआ है ना। सो फॉर मर्चेंट्स इट वाज डिफिकल्ट, राइट। Then the finishing was done in London before the export merchant sold the cloth in the international market. अब जब इनके पास से सब complete होकर थोड़ा अलग अलग stages में काम होकर आ रहा है, then it used to go to London for finishing, right? So London in fact came to be known as a finishing center. तो लंदन में उसकी finishing होती थी, then it was taken for selling in the international markets, right? So London was the finishing center. Also London में क्या था, we have seen in the previous chapter, there was bank in London who could finance these merchants, और merchants फिर क्या देते थे, आगे advance देते थे, right? Okay, so this was the proto-industrial system was
does part of a network of commercial exchanges. So we can call this system as proto-industrial system, क्योंकि industrialization के बाद तो क्या हुआ, फैक्ट्रीज लगने शुरू हो गए. अभी काम कहाँ हो रहा है, घरों से हो रहा है, राइट. ऑल दीज वर्कर्स आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन होम्स, राइट, फ्रॉम देयर ओन कंफर्ट जोन. दिक्कत किसको है, खाली मर्चेंट्स को, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे स्टेप्स में काम हो रहा है, राइट. बट फॉर वर्कर्स इट इज फाइन फॉर वर्कर्स. ओके, सो इसको वी कैन कॉल एज प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम. ओके, it was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. Each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. Just now I told you the work was done by different people, right. स्पिनिंग का अलग था, डाइंग का अलग था, राइट. तो अलग अलग प्रोसेस में काम हो रहा था, है ना. और ये सब क्या कर रहे थे, अपने घर से ही काम कर रहे थे. तो हर स्टेज पे 20 से 25 वर्कर एक जगह काम कर रहे थे और इनको एम्प्लॉय कौन करता था, मर्चेंट्स इनको कंट्रोल करते थे. ठीक है, सो दिस आई टोल्ड यू 2 minutes अगो. The coming up of the factory. Now we'll be learning that how factories came up, how industrialization process began, and from which country and from which place and in which year it began. So the earliest factories in England came up by the 1730s. So first of all, the factories were set up in England and in the year in 1730s it began. Okay. So what happened after that, factories were being set up, and in 1760 Britain was importing 2.5 million pounds. Okay, 2.5 million pounds of raw material, right, raw cotton it was importing to feed its cotton industry. Means वहाँ इंडस्ट्री लग गई है, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो वो इंडस्ट्री में जाके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा, है ना. सो दे वर इम्पोर्टिंग 2.5 million pounds of raw cotton till 1760. But by 1787 a drastic change, we see that by 1787 this import was increased to 22 million pounds. Now you can see it is a huge number, right. So there was a drastic change in the imports. Okay, how come this happened, how this from 2.5 million pounds, how it reached to 22 million pounds? Because of a series of inventions in the 18th century. Okay, so a series of inventions happened in the 18th century. Why we are saying 18th century? Because we are learning about 1730, 1760, 1787. All these will fall under 18th century. Children, I always told you कि centuries हमेशा आगे चलती हैं, है ना. So this will fall in 18th century. So a lot of inventions happened in 18th century that increased the efficacy of each step of the production process. So I told you few minutes ago that the production process was done, under many processes, right. So now because of inventions, the work became easy and the efficacy of the workers also increased. Okay, so these inventions, they enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. तो अब उन्होंने क्या कर दिया, production process inventions की वजह से the production process became easy, right. And if it will be since it was easy, the output per worker will also be increased, है ना. So production will also be increased. Okay, so that is why since the production process increased, इन्होंने क्या किया, ज़्यादा raw material import करना शुरू कर दिया, and then they started developing the production of stronger threads and yarns. So by 18th century, lot of factories had been set up, right, in Britain, and Britain's imports of raw material also increased, right. Now workers were doing work in both ways, right. हाथों से भी काम हो रहा था, इंडस्ट्रीज में भी हो रहा था. तो इसी दौरान क्या हुआ, the coming up of the factory में हम ये पढ़ेंगे, रिचर्ड ऑकवर्ड ने क्या किया, he created the cotton mill, right. अभी तक क्या हो रहा है, all the workers are working in their own place, right, and then उनको supervise करने के लिए there used to be supervisors, है ना.
Now this Richard Awkward created a cotton mill. तो इसमें उन्होंने क्या किया? He bought new machines, right? He purchased the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. तो एक mill के अंदर उन्होंने क्या किया? Costly नए machine खरीदे और उनको set up कर दिया in the mill itself. Now in the cotton mill, all the workers can come and then they can do their work, right? So all the processes were brought together under one roof and management, right? So all the workers will come, they will do their work comfortably and the management will become easy now, right? It will be easy now. तो इससे क्या होगा? मैनेजर भी ज़्यादा सुपरवाइजर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो से काम चल जाएगा, है ना? वर्कर्स की भी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होएगी, ओके? एंड you know, this allowed a more careful supervision over the quality, over the production process, a watch over quality and the regulation of labor, right? So इससे production increase हुआ, है ना? और since there were supervisors or managers to watch them, the entire process became easy. In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So by you know, early 19th century, फैक्ट्रीज क्या हुए? एक यू नो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए किसका? इंग्लिश लैंडस्केप का, मीन्स यूरोप का और इंग्लैंड ऑल्सो वी कैन यू नो कंसिडर, बिकॉज इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, ग्रेजुअली इट वाज स्प्रेड इन दी होल यूरोप, ओके? नाउ अब क्या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दिन में कंप्लीट हो गया? वॉज इट सो ईजी कि आज प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, कल जाके कॉटन मिल लगा दी और परसों प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया? नो. The pace of industrial change means the speed. The speed of industrial change was very slow. It was a slow and gradual process, right? So let us see, the most dynamic industries in Britain were cotton and metals. So Britain की जो सबसे ज़्यादा you know dynamic industries है, मतलब ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ में हो रहा था? एक तो वो कॉटन का काम कर रहे थे, उससे कपड़े बना रहे थे, दूसरा मेटल्स का. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आ चुका है, राइट? रेलवेज भी बन रहे हैं, शिप्स भी बन रहे हैं, ओके? सो growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization. So you know, growing at a rapid pace means it was growing at a you know fast speed. So सबसे ज़्यादा लीडिंग सेक्टर कौन सा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज में? कॉटन, राइट? सो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि टॉप मोस्ट क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में, तो कॉटन था लीडिंग सेक्टर. सेकेंड था iron and steel industry, okay? So after that the iron and steel industry led the way. Why? Because of the expansion of railways, right? Because of the expansion of railways, the demand for iron and steel increased rapidly. So railways कहाँ आ रहे हैं? खाली इंग्लैंड में नहीं, ऑल ओवर यूरोप में. वी हैव सीन रशिया में भी आ रहे थे, इंडिया में भी आए थे, राइट? एवरीवेयर रेलवेज वर एक्सपेंडिंग. सो व्हेन द रेलवेज वर एक्सपेंडिंग, definitely the demand for iron and steel will also increase, right? So this happened. So by 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million euro, double the value of its cotton export, right? तो 1873 आते आते जो स्टील और आयरन का एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया? डबल हो गया. Why Britain was exporting iron and steel? Because ब्रिटेन इज ब्लेस्ड विथ सच यू नो जोग्राफी कि वहाँ पर क्या है, ये सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं आयरन और स्टील के, है ना? तो माइनिंग बहुत हो रही थी वहाँ पे, ओके? नाउ द सेकेंड पॉइंट वॉज द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया उसकी स्पीड स्लो क्यों थी? बिकॉज द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. नए इंडस्ट्रीज तो लग गए थे, लेकिन क्या इतना इजी था उनको सेटअप करना और वहाँ पे वर्कर्स को बुलाना? Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. So, less than 20% लोग ही by the end of 19th century क्या कर रहे थे? कॉटन मिल्स में जाके और फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे थे, है ना? Rest of them, as it is, they were working from their homes or by hands and all that. So textile was a dynamic sector, but a large portion of output was produced not within factories but outside within domestic units, the way they used to do earlier in the countryside, okay?
Third, the pace of change in the traditional industries was not set by steam-powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. How do we understand that? Let us quickly have a look at the second point. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements, which means there was a change, although machines and cotton mills and industries were set up, but still what people did, people learned new ways. They have also taken up new things. जैसे लोगों ने glass work करना शुरू कर दिया, pottery करना शुरू कर दिया. So people adopted new things. Okay, that is why also the pace of industrialization was slow. Okay. So technological changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. तो ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी आ गई और लोग उसके पीछे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए और फैक्ट्रीज में जाना शुरू कर दिया. No, people were doing different things, right? And the one more reason was the new technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. उस ज़माने में अगर कोई मशीन्स आई हैं तो अगर एक्सपेंसिव मशीन्स आई हैं और कोई नई चीज़ आई है तो कोई भी मर्चेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा ना, राइट? एकदम से तो नहीं सारे पैसे निकाल के दे देगा, बिकॉज मशीन्स का तो कोई भरोसा नहीं है. द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, क्योंकि अगर कोई मशीन कभी ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था. Also, they were not as effective as their inventors and manufacturers claimed. Machines बहुत ज़्यादा कोई effective भी नहीं थी. So that is why some industrialists, they did not want to invest in the industries. They thought that when workers are doing, why do we invest our money in the machines? जिनका कोई भरोसा भी नहीं है, ऐसे machines में हम क्यों invest करें, है ना? For example, the steam engine. So who James Watt, he has improved the steam engine which was produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. तो Newcomen जो थे उन्होंने steam engine को produce किया, but James Watt ने क्या किया, इसके अंदर कुछ changes किया और उसको patent करा लिया अपने नाम पे as new engine in 1781. Okay. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model. उन्होंने उसको थोड़ा और improve करके एक नया मॉडल बना दिया जेम्स वॉट के फ्रेंड ने. But for years he could not find any buyers. स्टीम इंजन बनने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में खूब सारे बायर्स मिल गए और स्टीम इंजन बिकना शुरू हो गया और सब लोग इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में जाके काम करने लग गए उससे. नहीं, फॉर ईयर्स ही कुड नॉट फाइंड एनी बायर, राइट? At the beginning of the 19th century, there was no more than 321 steam engines all over England. So only 321, right? In beginning of the 19th century, only 321 steam engines were there all over the England. So people did not adopt this change. Why? Because industrialists did not adopt it, है ना? उनको क्या लग रहा था कि machines को तो एक बार खरीद लिया तो फिर रखना पड़ेगा. वर्कर का क्या होता है, you can anytime you can keep someone on work, anytime you can remove anyone from work, है ना? वर्कर्स को तो कभी भी लगा लिया, कभी भी हटा दिया काम से, राइट? लेकिन machines अगर खराब हो गई तो उनके रिपेयर पे तो बहुत खर्चा आने वाला था, है ना? So that is why these industrialists were a bit skeptical about using the machines. Okay. So what do we understand from this steam engine example? So even the most powerful new technology, because the steam engine is one of the biggest inventions in the world, right? So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor was slow to be accepted by industrialists. Now this was the new technology. Also it was enhancing the productivity of the labor. Work bhi jaldi ho raha tha, hai na? But still the industrialists, they were slow in accepting this change. Okay, so that is why we can say the speed of the industrial revolution was very slow. Okay, so industrial revolution was a slow and gradual process. एक दिन में नहीं हुआ था. Okay. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.